Then it is decomposed with the microorganisms and the biogas is also produced. Again, anybody else? What happens actually in the biological process? कौन बताएगा? That day I have discussed. Now already we have seen what is that process. Already it was discussed in the class. That means no one have read the textbook. Yes. Now in the biological process, the anaerobic bacteria converts the sludge into biogas. Yes. Then tell me why it is called as biological process. Yes, Rishi. Stand up. Why it is called biological process? Why not physical? कुछ reason है या नहीं है? Any reason is there? Simply it is called biological. No reason. Nothing. याद आ रहा है कुछ या भूल गए सब कुछ? Because it produces biogas. Yes, anybody else this side again? Yes, you, Aniket, बताओ. Stand up fast. Close the textbook. Everyone should close the textbooks. Why it is called as a biological process? Yes, Samriddhi. But at least you should stand up now. भूल गए तुम लोग स्कूल के मैनर्स भूल गए मैडम ने कुछ पूछा है तो यू शुड स्टैंड अप यस Because the anaerobic bacteria बिकॉज the anaerobic bacteria because the bacteria are used, the bacteria are converting this or the processing whatever is taking place is done by the anaerobic bacteria. Bacteria are all living things. Understood? Microorganisms are living. Microorganisms है करके हम उसको non living नहीं बोल सकते हैं. They are also living beings. Understood? Plants, animals, microorganisms. Microorganisms also come under the living beings. Is it clear? So these process is done totally by the bacteria or the microbes, and so it is called as biological process. जिसमें living beings का support होता है या it is done through the living beings. That is why it is called as a biological process. समझ में आ गया अभी? कोई भी रीडिंग मत करो. Don't touch the टेक्स्ट बुक. ऐसे ही आ जाओ. वापस घर चले जाओ. फिर से दूसरे दिन बैग लेके वापस. नो नीड टू रीड. नथिंग. सब कुछ मैडम करेगी. फिर पेपर कौन छुड़ाएगा? Sit down, both of you. So this process, the second process is also called as biological process. After that comes the chemical process. So 97% of the water is clean and clear. Now only left is suppose germs are there, then it can be removed or killed through with the help of the chemicals. That is, you can use chlorine tablets, or you can also use the ozone tablets. समझ में आ गया? These two tablets are used. They will kill the germs present in the water. तो फिजिकल जो इम्प्यूरिटीज है वो निकल गई. बायोलॉजिकल जो इम्प्यूरिटीज है ऑर्गेनिक मैटर जो था वो भी निकल गया. बचा हुआ तो जो था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So they are also now killed. So the water is pure. Okay. Actually इतना pure water को पीने के लिए ही यूज कर सकते हैं, but that comes not under the sewage treatment. It comes under the purification. The third method, simply which is used for mainly for the purification of water, not in the sewage. समझ में आ गया? Now the next step is better housekeeping methods, isn't it? So why it is called as better housekeeping or better housekeeping practices?
better housekeeping practices, because this sewage is generated from the houses. So if we are alert, if we are aware, so less amount of sewage will be produced, as well as we can reduce the amount of whatever the sewage, or we can say the impurities will be reduced. जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी जो क्वालिटी है हम उसको कम कर सकते हैं. अंडरस्टूड नाउ? So the first one is cooking oil and fat should not be thrown down the drain. They can harden and block the pipes. In an open drain, the fats block the soil pores, reducing the effectiveness in filtering the water. Now, जो भी फैट्स, ऑयल या ऐसे घी के जो मटेरियल होते हैं, या सपोज घी खराब हो गया तो आपने डाल दिया, या ऑयल बच गया है, या कुछ हो गया उसमें कुछ गिर गया तो हम उसमें ड्रेन में डाल देते हैं. नो, डोंट थ्रो इट इनटू द ड्रेन या सिंक में डालना नहीं है. क्या करना है फिर? डस्टबिन में डाल दो. ओके. नाउ व्हाट इफ यू थ्रो इनटू द सिंक? क्या होगा? पानी में वो चोक कर देगा ड्रेन्स को. दूसरी बात, अगर वो मिक्स हो गया सॉइल में या चला गया पानी, तो सॉइल में सबको पता है कि ऑयल फ्लोट होता है. ऑयल विल चोक द पोर्स. सॉइल इज पोरस, और जितना सॉइल पोरस रहेगा उतना ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करेगा. उतना जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, so more fertile the soil will be. It is required for the plants. Understood? It is required for the plants. It is required for the organisms, microorganisms which are living inside the soil. बहुत बहुत जरूरी है ऑक्सीजन. But if we are putting the oil into the drain or सीधे वो वहाँ ऑयल और सॉइल में चला जाएगा, सूखने के बाद पोर्स क्या हो जाएंगे? चोक हो जाएंगे. Now they are filled with oil. Now what will happen? Oxygen will not be absorbed. वो तो layer form हो गया ना. Oxygen is not absorbed. If oxygen is not absorbed, it will not be absorbed into the soil. So the microorganisms present inside the soil, जो छोटे छोटे insects होते हैं, वो मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के. Is it clear? Yes. The next point. Chemicals like paint, solvent, insecticides, motor oil, medicines may kill the microbes that help to purify the water. तो water को भी purify करने के लिए microorganisms, some of the useful microbes are very very important. We have already seen, isn't it? जैसे sludge formation में हमने देखा, the anaerobic microorganisms, they decompose it and the sludge is removed. It is dried and it is used for manure, as a manure. वैसे ही ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं या डिकम्पोज कर लेते हैं, लाइक दैट. So when if the useful microorganisms are killed, then what will happen? The quality of the water will be reduced. Understood now? तो कैसे क्वालिटी रिड्यूस होगी? Because these microorganisms increase the oxygen. But if they are killed, what will happen? ऑक्सीजन का अमाउंट पानी के अंदर अपने आप ही कम हो जाएगा. फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे, डिसीज स्प्रेडिंग जर्म्स बढ़ जाएंगे. ऑक्सीजन जितना वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतना पानी प्योर होता है. That is why the running water, the river water is fresh water and used for drinking purpose. है ना? हम हमेशा झरनों का पानी या रिवर का पानी क्यों पीते हैं? वो हमेशा रनिंग वाटर रहता है. यानी कि अगर कुछ उसमें ऐड भी हो गया, वो सरफेस पे जब वो स्पीड से निकलता है, तो जैसे जैसे वो स्पीड से निकलता है, मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन होते रहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर. तो when these water molecules are running upside down, what it is absorbing more and more
ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो उसका अमाउंट बढ़ते रहता है ऑक्सीजन का। अंडरस्टूड? स्टिल वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कभी ज्यादा नहीं रहता है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? जो पानी रनिंग में रहता है या अनस्टेबल होता है, घूमते रहता है, उसमें सरफेस चेंज होते रहता है ना, बिकॉज इट इज मूविंग, सरफेस इज चेंजिंग, सो मोर एंड मोर ऑक्सीजन इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड। अभी हम आपके घर में किसी किसी के घर में फिश पॉन्ड है, किसी के घर में नहीं है। फिश पॉन्ड देखा है सबने? एवरीवन हैव सीन फिश पॉन्ड? Yes, ma'am. इन फिश पॉन्ड यू माइट हैव सीन ऐसे फिशेस होते हैं, स्मॉल फिशेस, और फिर ऐसे ऐसे रंग बिरंगी फिशेस भी होते हैं, एंड वन मशीन इज देयर केप्ट लाइक दिस, एंड bubbles are coming here like this. Yes. What is this machine called? Aerator. It is called aerator. What is the function of this machine? It is yes, supplying the air or the bubbles. उससे क्या होता है, ये जितना bubbles ऐड होंगे उसमें उतना ऑक्सीजन सप्लाई होते रहता है। समझ में आ गया? ये पानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे 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 होते रहता है because of the bubble formation. Water is not still here, water is moving. Understood now? Yes, ma'am. So what, when the water is moving and moving, what will happen? The new molecules come in contact with the air and the oxygen is getting dissolved. Again वो नीचे जाएगा, दूसरा नया मॉलिक्यूल आएगा, वो एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, वो नीचे जाएगा। It is moving. Understood? Yes, ma'am. So that is why these oxygen, that means mainly we were talking about the useful microorganisms, उनको अगर बचाना है तो ये harmful chemicals like solvent, paints, motor oil, medicines, इनको कभी भी पानी में नहीं फेंकना है। You can throw it into the dustbin. मेडिसिन भी कभी कभी आप बॉटल है क्या डाल दो ऐसे सिंक में, डोंट डू इट लाइक दैट। उसको अच्छे से उसका लिड बंद करो, क्लोज इट एंड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, बिकॉज इट इज फुल ऑफ केमिकल्स। कौन सा केमिकल कौन से ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट या किसको मार डालेगा हमें बोल नहीं सकते हैं। हमें नहीं मारता इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स को नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? फिर सॉल्वेंट्स, पेंट्स, बहुत बार हम ब्रश वगैरह धो के वो पूरा पानी फेंक देते हैं, वार्निश का या टर्पेंटाइन रहता है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं। सॉल्वेंट यानी जो दूसरे केमिकल्स या दूसरे सॉल्यूशंस को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। यू माइट बी नोइंग दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वी कॉल वाटर एज अ universal solvent. Why we call water as a universal solvent? 6th class में पढ़ा है कि नहीं? Water is a universal solvent. क्यों? Because it has a quality. Most of the material gets dissolved into water, है ना? बहुत सारे ऐसे substances हैं जो पानी में घुल मिल जाते हैं, dissolve हो जाते हैं. That is why it is called as a universal solvent. Understood now? वैसे ही सॉल्वेंट जो बाकी सॉल्वेंट पानी नहीं दूसरे सॉल्वेंट होते हैं, जैसे हम मीडियम यूज करते हैं, इंक के लिए यूज करते हैं, देन व्हाइटनर का जो अलग मीडियम आता है, पेंट का अलग मीडियम आता है टर्पेंटाइन, फिर हमारा रिमूवर का एक अलग मीडियम आता है, नेल पेंट को रिमूव करने के लिए अलग मीडियम। दीज सॉल्वेंट्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। वहाँ लिखा ही होता है डोंट स्मेल इट और डोंट थ्रो इट, कॉशन लिखा होता है, फिर भी हम उसको स्मेल करके देखते हैं। हार्मफुल होता है, कैंसरियस होता है, इट कॉजेस कैंसर और समटाइम्स कैंसर सेल्स जनरेट हो जाते हैं। अंडरस्टूड?
So these solvents should not be thrown into the water sink, उसको डस्टबिन में डाल दो, ठीक है. Now next, used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels should also be thrown in the dustbin. These waste choke the drains and they do not allow the free flow of oxygen. So same thing, solid substances जो है वो पानी का जो स्पीड है उसको कम कर देता है, फ्री फ्लो नहीं होने देता है, and because of that what happens, the level of oxygen decreases. Understood now? Then next, sanitation and diseases, very important topic. Sanitation and diseases. Do you know the meaning of sanitation, students? Who will tell? Yes. Cleaning मतलब sanitation. तो हम क्लीनिंग ही क्यों नहीं बोलते हैं फिर? कोई इजी वर्ड है? Okay. So the proper we can say disposal of the sewage. Proper disposal of the sewage is called as the sanitation. सबके घरों में sanitation proper होना चाहिए, isn't it? And not only the houses, but from wherever the sewage is generated. जैसे स्कूलों में होता है तो स्कूलों से, फैक्ट्री से, घरों से, ऑफिसेस से, from everywhere wherever the sewage is produced, from in that places sanitation should be proper. It should be proper. That means if sanitation system is not proper, what may happen again? The Diseases will spread. Understood? So sanitation is the proper disposal of the sewage, या सीवेज हम कह सकते हैं वेस्ट. तो जहाँ जहाँ पर वेस्ट होगा वहाँ पर गंदगी होगी, तो वहाँ पर डिसीज भी फैल जाएंगे. तो ये सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. Understood? And that is not proper in our country, at least we can say that. Now, poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases. So you can say here, these diseases. Why we have lead to the diseases? What is the reason for the diseases? because of not proper sanitation. Yes, poor sanitation and contaminated drinking water. तो उसका cause एक ही है ना? Yes. Contamination means impurities when they are mixed, then we can call it as a contaminated water, polluted water. When the pollutants are there in the water, impurities are called as contaminants. Impurities are also called as pollutants. Noun और एक noun है एक word. Pollutants, pollution. Pollution क्यों होता है? Because it contains pollutants. समझ में आ गया? Why the water is contaminated? Because it contains contaminants. समझ में आ गया? तो ये जो impurities है, they are called as contaminants. So because of the presence of the impurities, it is called as contaminated water. तो ये मेन रीजन है हमारे कंट्री का भी हम बोल सकते हैं. मेन रीजन is the poor sanitation, which leads to the diseases, and drinking water. जो drinking water है, that is not at all safe. उसका भी रीजन poor sanitation ही है. Because again, sanitation is not proper, sewage system is not proper, all the water is disposed into the river. वही पानी हमें आता है नलों में, और वो जो पानी आता है उसका भी प्रॉपर
प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता है और फिर वो इम्प्योर रहता है एंड वी गेट डिसीजेस फ्रॉम द वाटर। अंडरस्टूड? मेन रीजन ही ये है, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर दैट इज नॉट हेल्दी। सो नाउ so very large fraction of our people defecates in the open. Now this is all about the poor sanitation. So what are the reasons of the poor sanitation? Large number of the people, अभी कुछ सालों पहले ही हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही जो स्वच्छता अभियान लाया था उसके अंडर में विलेजेस में टॉयलेट जो है कंस्ट्रक्ट करवा के दिए थे। वहां से अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है ना? नहीं तो गांव में दिस पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल deficits in the open, defecates in the open means they go for toilet in the open। तो पहले ऐसे जमाने में बोलते थे बाहर जाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, but see the disease spreads in a very rapid manner because अगर मान लो कि किसी को मलेरिया हो गया है, स्प्रेडिंग वाला कोई भी डिसीज हो गया है, तो वो बाहर जाके टॉयलेट जाके आता है तो बाहर वो जर्म्स जो फ्लाइज मॉस्किटोज वहां जाएंगे, या ये जो जर्म्स है वो फैल जाएंगे, जैसे एक का दूसरे को, एक को दूसरे को हो गया, दूसरे का तीसरे, मींस पूरा गांव उसके चपेटे में आ गया, है ना? ये तो जल्दी जल्दी फैलने वाले डिसीजेस होते हैं। सो लाइक दिस लीड्स टू द, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरा एपिडेमिक लीड्स टू द एपिडेमिक। पहले ऐसे ही होते थे गांव में प्रॉपर मतलब सैनिटेशन हो या फिर हॉस्पिटल्स नहीं रहते थे उस जमाने में, तो इसके कारण एक के घर में आके वो बीमारी पूरे गांव में हो जाती थी। आपने सुना होगा, प्लेग के बारे में सुना होगा, है ना? तो ये ऐसे मतलब तब वो कंट्रोल नहीं होता था, तभी उतने हमारे पास मेडिसिन या टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम उसको कंट्रोल कर सके। तो एपिडेमिक, जैसे हमारा ये कोविड जो पैंडेमिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैंडेमिक। लेकिन एक गांव में आ जाता है, गांव के गांव पूरे, कभी कभी बहुत सारे लोग मर जाते हैं, दैट इज एपिडेमिक। ओके, सो व्हाट इज द रीजन? A large fraction of our people defecates in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many a time directly in water. Untreated human excreta is a health hazard. Now have you understood everyone? Untreated human excreta is a health hazard. Health के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, dangerous है। Hazard means dangerous. Yes? Hazardous लिखा होता है बहुत बार, hazardous डेंजरस। हेल्थ हजार्ड हमारे हेल्थ के लिए वो डेंजरस है बिकॉज द डिसीजेस गेट स्प्रेड वेरी फास्ट। देन इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सी, आपको ऐसा लगता है कि अरे गांव में तो गए हैं या उधर मैं ही तो गया हूँ, लेकिन पूरा गांव अभी तो नहीं है ये सीन, लेकिन पहले बहुत सालों पहले पूरे गांव के लोग बाहर ही जाते थे, सुबह निकलो तो सब साइड में रोड के, है ना? ऐसे रहता था सीनरी, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। नाउ गवर्नमेंट हैज सो मेनी स्कीम्स फॉर दिस कंस्ट्रक्टिंग द टॉयलेट्स एंड स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो भी है उन्होंने स्कीम स्टार्ट किया है, उसमें गांव में ही नहीं घरों घरों में टॉयलेट्स बना दिए हैं, तो लोगों को जाने के लिए भी सुविधा हो गई है। Isn't it? Understood? तो उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि नहीं हमारे घर में टॉयलेट होना चाहिए क्योंकि अच्छा दिखता है, ऐसे नहीं, उसके पीछे हेल्थ, ह्यूमन हजार्ड, ये एक प्रॉब्लम था। Understood now? Is it clear? तो बहुत डिसीजेस अभी हमारे कंट्रोल में आ गए, गंदगी नहीं फैलती है, गंदगी नहीं है तो डिसीजेस भी स्प्रेड नहीं हो रहे। अंडरस्टूड?
Then both the surface water and groundwater gets polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers, as you learned in chapter 16. Thus, it becomes the most common route for waterborne diseases. This is all because of the human defecation in open. तो कोई रेलवे ट्रैक पर, तो कोई ऊपर, तो कोई बहुत सारे लोग रिवर बेड में, वो पानी फिर आएगा, पानी मिक्स हो जाएगा, वही पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, जर्म्स उसमें रहेंगे, फिर ये फैलेगा, लाइक दैट. और जितने भी वाटर बॉर्न डिसीजेस है, मोस्ट ऑफ द डिसीजेस लाइक जैसे हम कॉलरा, टाइफाइड लेते हैं, ये वाटर बॉर्न डिसीजेस है और ये बहुत जल्दी फैलते हैं. बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं. अंडरस्टूड? तो जो पानी से, यस, And now you said that untreated is allowed. Then why do you use it as manual? इसीलिए अनट्रीटेड कहा है. अनट्रीटेड मींस डायरेक्टली दे आर गोइंग इन द ओपन. अभी ट्रीट कब करेंगे और उसको छोड़ेंगे? हाँ, जैसे अभी एक टॉयलेट बना दिया है, टॉयलेट का जो एक्सक्रीटा है वो वहां जमा हो गया, अभी उसको हम, आपके पास ऑप्शन है, नाउ देयर इज ऑप्शन, यू कैन आइदर यूज इट एज अ बायोगैस या फिर उसको ट्रीट करके फिर उसको छोड़ देना. वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं या उसका बायोगैस भी कर सकते हैं. तो इसका ट्रीटमेंट हो गया, डिकम्पोज हो गया, देन इट इज नॉट हार्मफुल. लेकिन डिकम्पोज नहीं किया है तो फिर तो वो हार्मफुल है ना, जर्म्स तो वैसे ही रहेंगे एंड इट विल गेट स्प्रेड. अंडरस्टूड नाउ? So either you can treat by chemical, you can treat it by decomposing it, you can use it as manure, you can use it the fuel also. जैसे हम बायोगैस, और हमने उसके पहले भी बोला है कि हम फ्यूल के जैसे यूज कर सकते हैं इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस में. ओके, अंडरस्टूड नाउ? सो देन now again this river water, और river water जो है फिर ड्रेन होगा धीरे धीरे, और ड्रेन होके ये पानी जो है वो वेल में आएगा, ट्यूब वेल्स में आएगा, यानी अंडरग्राउंड आल्सो वाटर विल गेट पोल्यूटेड, isn't it? अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट करने के लिए हमें ट्यूबवेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा. जस्ट कोई भी एक वाटर बॉडी को आप पोल्यूट कर दो, वो वाटर बॉडी का जो पानी है वो 24 घंटे सीप होते रहता है, ड्रेन होते रहता है, अंडरग्राउंड फिल्ट्रेशन होते रहता है, उसका इनफिल्ट्रेशन, वो पानी जाके वहां मिलेगा. वहां से अगर मैंने वहां वेल लगाया है या बोरवेल लगाया है, वहां से पानी मैं ले, तो यहाँ का पानी खराब है मींस वहां भी मुझे खराब पानी आएगा ना. अंडरस्टूड? So they are the root cause for the waterborne diseases. They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery, etc. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है waterborne diseases के. What is that? सबको पता है, cholera, yes, typhoid. ये waterborne, रेनी सीजन में आप देखो, क्योंकि पानी है हर जगह पे और पोल्यूटेड गंदा पानी भी नलों में आता है, तो ये बीमारियां ज्यादा फैलती है. कॉलरा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री. अंडरस्टूड? Then alternative arrangement for the sewage disposal. Then now next what? How to dispose the waste? अगर हमने untreated डाल दिया है, poor sanitation है, तो these many hazards are there. So now what is the alternative? How to do the alternative arrangement? Now first, to improve the sanitation, low cost on-site sewage disposal systems are being encouraged. Now जैसे for example in villages में सीवरेज सिस्टम होता है क्या? अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते हैं क्या बड़े बड़े? नो, सीवरेज सिस्टम इज ओनली सीन इन द सिटीज, मेट्रो सिटीज. अंडरग्राउंड जितने भी ड्रेन सिस्टम होते हैं बड़े बड़े सिटीज में ही होते हैं, छोटे सिटीज में नहीं होते हैं या विलेजेस में नहीं. देन व्हाट? सो हियर septic tanks are constructed. Then what is this septic tank? एक स्टैंडर्ड जो टैंक है वो बनाया जाता है अंडरग्राउंड, स्टैंडर्ड टैंक. जैसे टॉयलेट के लिए टैंक बनाना है तो इतना इतना
10 बाय 15 या 10 बाय 20 ये उसका मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहता है, उतना आपको डिग करना ही है। उसके ऊपर टॉयलेट बना देते हैं। ये जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, दैट इट गेट्स कलेक्टेड इन दैट टैंक, सेप्टिक टैंक कहा जाता है विलेजेस में, सेप्टिक टैंक। एंड दिस इज कलेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, और बहुत सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद फिर वो भर जाता है। जब वो पूरा भर जाता है, एट दैट टाइम ओनली इट कैन बी रिमूव। सो द मशीन नाउअडेज इट इज रिमूव बाय द मशीन। टैंकर आते हैं, म्युनिसिपैलिटी टैंकर्स, और वो मशीन लगा देते हैं उस पाइप में, ज्वाइन कर देते हैं। ऑल द एक्सक्रीटा इज collected in the other tanker, and then that tanker is taken somewhere else, जहाँ पर आपको अगर फ्यूल बनाना है या डिकम्पोजिंग करना है वहाँ लेके जाओ, या फिर छोड़ दिया जाता है उसको। अंडरस्टूड नाउ? सो दैट सेप्टिक टैंक इज नाउ एम्प्टी। फिर और 10-20 साल के लिए देखने का काम। इज इट क्लियर? सो सेप्टिक टैंक्स आर आइसोलेटेड, इंडिविजुअल। सीवरेज का इंडिविजुअल नहीं है, उसका पाइप उसके साथ, फिर ये मेन स्विच हुआ, फिर मेन वाला दूसरे इसको, ऐसे। नाउ सो फॉर एग्जांपल आर द सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। Septic tanks are suitable for the places where there is no sewerage system. Now, where are the septic tanks constructed? No sewerage. Where there is no sewerage system. Sewerage system कहाँ पर नहीं है? Villages. Villages. Villages, small cities. Okay. Then another example for hospitals, isolated buildings, or a cluster of 4 to 5 houses. कहाँ पर सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं? विलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, और बिल्डिंग्स वेयर इट इज आइसोलेटेड, यानी गांव से बहुत दूर है तो सीवर सिस्टम वहां जाएगा क्या? एक घर, 2 घर के लिए गवर्नमेंट को वो सिस्टम, ड्रेन सिस्टम वहां तक ले जाना पुराएगा क्या? है ना? सो एट दैट टाइम, ठीक है, दूर है तो दूर है, तो दे विल कंस्ट्रक्ट देयर ओन septic tanks. They will not connected to the sewerage. नहीं, अरे 20 किलोमीटर है, मुझे तो अभी पाइप लेके जाना पड़ेगा, नहीं। So just they can construct their septic tanks. काम खत्म। Then next is hospitals. Now why hospitals are not connected in the sewerage? Because it is far from villages. Because हॉस्पिटल्स तो मतलब सिटीज में भी है ना, जरूरी नहीं है सब बाहर ही हो। in sick people Yes, correct. See, hospital में there are different kinds of patients and variety of diseases are there. And if those germs, if it gets mixed with the sewerage, तो वो फैलने के chances और ज़्यादा है। इसलिए mainly hospitals they are isolated. उनको वहाँ सीवरेज सिस्टम से जोड़ा नहीं जाता है। They have their own septic tanks. Now have you understood? yes ma'am. Clear to all? Yes ma'am. So some organizations offer the hygienic on-site human waste disposal technology. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप करके ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने की मतलब सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी। These toilets do not require scavenging. Excreta from the toilet seats flow through the covered drain into the biogas plant, and the biogas produced is used as a source of energy. तो ये अलग टेक्नोलॉजी है, और these do not require any scavenging. Means you can say that इसके लिए डिस्पोजल की कोई जरूरत नहीं है, because it is directly converted into the biogas. जैसा मैंने कहा सेप्टिक टैंक का तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बट
purposefully, if somebody wants to convert it, then this can be converted into the biogas and we can get the fuel also. Understood? By using the technology. So these are all alternatives for सीवरेज या सीवेज. अगर सीवेज नहीं है तो क्या क्या है हमारे पास? सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स है, फिर बायोगैस टॉयलेट्स. अंडरस्टूड? फिर एक और ब्रैकेट में वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट इज आल्सो द सेम. वर्मी प्रोसेसिंग मींस प्रोसेस करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट करना. सिंपल. So this toilet is designed in such a way that human excreta is treated by the earthworms that has been tested in India. It has been found to be novel. A low water use toilet for the safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple and hygienic. The human excreta is completely converted to wormy cakes, a resource much needed for the soil. The resource that is needed for the soil means जैसे कि हमने काउडंग को भी देखा है, इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर. वैसे ही वर्मी कंपोस्टिंग करके द टॉयलेट्स या ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर. क्लियर? लास्ट, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस यही तो ज्यादा जरूरी है ना? पब्लिक प्लेसेस की सैनिटेशन ज्यादा जरूरी है. टाइम इज ओवर आई थिंक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कब हुआ? Ma'am, Very grand. ma'am,